Hello students, I am your Zed sir, welcoming you in the fourth part of the chapter number 6 life process. So here today's our key points are respiration, then after we will understand the respiration in human and respiration in plant. So one by one we will understand each and every point. So let's start. So what is respiration? Respiration means the process in which the cell of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. Okay, here what is happening? Here the organism which have the cell that obtain the energy. How they obtain the energy? They have the glucose, and with the glucose when the oxygen is combined, and because of that the energy released, or you can say you obtain the energy. So cell get the energy. So it is the process in which the cell of an organism obtain energy by combining the oxygen and the glucose is called respiration. So it involves the breathing. When you breathe, you get the oxygen, and that oxygen go inside your body and combined with the obtained energy. Now moving forward, so there are two types of respiration we have. First one is the aerobic respiration, and second one is the anaerobic respiration. So what is aerobic respiration? So it is the process of producing energy in the presence of oxygen. So in that aerobic respiration, the energy is produced, okay, in the presence of oxygen. So if we have the oxygen, we get the energy. So this type of process is known as a aerobic respiration. Now coming on anaerobic respiration. So it is the process of producing energy in the absence, or you can say lack of oxygen. When there is a lack of oxygen, or you can say there is an absence, there is not a proper amount of oxygen, so at that time the energy also released, but this type of respiration is known as an anaerobic respiration. So let's see the examples. So we have the glucose. That formula of the glucose is C6H12O6. Now when the food enter in the cell, that cell carries a cytoplasm. That cytoplasm convert the glucose into a pyruvate. So formula for the pyruvate is C3H4O3. So this is the formula for the pyruvate. Now the further pyruvate is converting in the form of energy with the help of oxygen or with the not help of oxygen. Let's see the example. So here first one is the pyruvate is converting into the carbon dioxide and ethanol in the absence of oxygen. So what is the formula of ethanol? So formula for the ethanol is C2H5OH. This is the formula for the ethanol. Okay. So when there is a pyruvate, okay, and pyruvate is converted into ethanol and carbon dioxide. Why they converting into ethanol carbon dioxide? Is there is an absence of oxygen. So example for it is yeast. Yeast is nothing but Hindi you can call as a khamir. Okay, so it is one type of single cell organism, and it is from the fungus family. Yeast is from the fungus family. Where we are using yeast? It is used in the preparation of cake and bread. So जो fluffy बनता है ना, बहुत थोड़ा नरम बनता है ना, it is because of the yeast. ठीक है, this is the example. So when you are preparing this, the carbon dioxide release हो रहा है, ठीक है. Now coming on to the next, that is the pyruvate is converted into lactic acid in the presence of lack of oxygen. बहुत कमी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, उसे lack of oxygen बोलते हैं. So the example for it, muscle cell.
ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, तो उसका एग्जांपल कहाँ पे, मसल सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फॉर्मूला फॉर द लैक्टिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड? इज C3H6O3 are the chemical or you can say formula of the lactic acid. अभी इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको. इज एग्जाम्पल इज मसल सेल. सो how this lactic acid is produced, so let's understand. So when you are doing any hard work, okay, and due to that the breathing is increased, your breathing will be increased, and because of that your oxygen is not properly reached to the every part of your body, and due to that there is a lack of oxygen, and because of that the lactic acid produced, and योर मसल क्रैम्प, आपका मसल क्या हो जाए, क्रैम्प हो जाए, आपको दर्द होने लगता है. ठीक है. सो आर द एग्जाम्पल फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन वेयर द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द presence of oxygen. In the presence of oxygen, the pyruvate is converted into water plus carbon dioxide plus energy. It is very useful energy. So here this conversion is occur in the mitochondria, which is in your the mitochondria which is present in your cell. Clear? Now moving forward, so in above slide the energy released during the cellular respiration in the presence of oxygen. Cellular respiration means what? जब एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ पे रिलीज हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था. That energy is used to synthesize the molecule called ATP. वो कहाँ पे यूज होता है ये एनर्जी प्रिपेयर करने के लिए, ATP प्रिपेयर करने के लिए. अब ATP is given to each and every cell. So ATP is nothing but the energy currency of life. So formula, full form of the ATP is adenosine triphosphate. So why we call it triphosphate? Let's see the chemical formula for it. So what is the chemical formula for it? The chemical formula for it is C10H16H5O13. Okay. C10H16H5O13 and P3. Okay, so because of the presence of three molecules of phosphate, it is known as a adenosine triphosphate. Clear? So this energy which is producing at the time of cellular respiration, so that energy is used to synthesize the molecule called as a ATP. Now moving forward on the new topic, that is the human respiratory system, or you can say respiration in human. So let's start. So oxygen rich air is taken into the body through the nose. So what happen when we take the oxygen, okay, or you can say air which is oxygen rich, so we are getting that air through our nose. That air is filtered by fine hair present in nose. So now the air should be filtered, because in air there is a number of unwanted thing which we don't want. Okay, so it will be filtered by our fine hair, which is hair present in our nose, that will filter the oxygen air. From nose the air passes through the throat, now then to the lungs. After from the nose that air passes through our throat, and then after to our lungs. Now let's study from the image. अब आप देख रहे हैं इसमें air is going from your nose and nasal cavity, the air is filtered with the help of your fine hair, then after it go to the pharynx. Here is the pharynx, okay,
दिस इज फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स इसको बोलेंगे हम. इट इज अ कॉमन पाथ फॉर योर माउथ एंड फॉर योर एयर. ये कॉमन पाथ होता है. देन आफ्टर देयर इज अ लैरिंग्स. लैरिंग्स इज नथिंग बट द योर थ्रोट, योर वॉइस बॉक्स. देन आफ्टर देयर इज अ ट्रेचिया. Then after the air pass through the bronchi. Okay, this is your bronchi, and bronchi have some small branches which you are seeing, that is called as a bronchus. Okay, now bronchus have a small balloon like structure that you are seeing on your screen. That is this balloon like structure that is known as a alveoli. Okay, now let's start. So when your air is reached to the lungs, what happened? The air passes, okay, divided into smaller and smaller tubes. Okay, the air passes to your lungs and divided into smaller and smaller tubes. That is called as a bronchus. Okay, ब्रोंकी का क्या होता है? ब्रोंकिस होता है. वो स्मॉलर ट्यूब में चले जाते हैं. वो ट्यूब का नाम क्या है? ब्रोंक्यूज. एंड फाइनली रीच टू द एल्वियोली. अब एल्वियोली विच आई शोड ओवर हियर यू. ओके, दिस इज द एल्वियोली. एंड योर एयर, जो एयर होता है लंग से कहाँ पे जाता है? एल्वियोली में जाता है. अब क्या होगा? अब आफ्टर रीचिंग टू द एल्वियोली, नाउ व्हाट हैपन? सी, सो एल्वियोली इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर. देख रहे हैं आप, इट्स बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, विच प्रोवाइड ए सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस. क्या प्रोवाइड करता है? ये गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है. इसकी सरफेस पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज हो रही है. The wall of the alveoli connected with the blood vessel. As you are seeing red and blue lines, आप देख रहे हैं वो alveoli के ऊपर है. It's a blood vessel. So the wall of the alveoli connect with the blood vessel. Then oxygen dissolved in the hemoglobin from alveoli and carried from lungs to cell in all part of body. So यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन आ रहा है एल्वियोली के अंदर, वहाँ से अभी ब्लड वेसल का काम होता है, जो एल्वियोली से ऑक्सीजन लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स जो होता है बॉडी के, वहाँ पे वो क्या करता है? पहुँचा देता है. अब ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है हेमोग्लोबिन. ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है. अब आप बोल रहे हैं सर दैट एयर इज और सॉरी ब्लड इज कैरिंग द ऑक्सीजन. सो ब्लड इज ऑल्सो गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, सो हियर द एक्सचेंज ऑफ गैस ओकर एट द सरफेस ऑफ एल्वियोली. कार्बन डाइऑक्साइड देना है, ऑक्सीजन लेना है. एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना. यहाँ पे ऐसा हो रहा है. ठीक है. देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन टू द एल्वियोली एंड एल्वियोली टेक दैट carbon dioxide given to your lungs, and then after from your nose the carbon dioxide will be released. The blood brings carbon dioxide from the cells and release into alveoli, जैसा मैंने आपको बताया था. सो दिस इज द प्रोसेस ऑकरिंग इन योर बॉडी. अब देखिए यहाँ पे एल्वियोली से लिया, अब कहाँ पे आ गया? इट इज रीच टू योर lungs, then after pharynx, then after through your nasal cavity they come out from your nose. So this simple process occurring in our body. अब उसके बाद लंग्स में पहुंचने के बाद किसका काम होता है? हेमोग्लोबिन का काम होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देता है. नाउ यहाँ तक हमने समझा कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होता है. ठीक है. Then after, now we are coming on to the respiration in plant. So how the respiration occur in plant? So what is the necessary of the respiration in plant? Respiration मतलब हमें पता है कि ऑक्सीजन इनहेल करना. तो प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है. तो थोड़ा समझते हैं. पहले तो देखते हैं, फर्स्ट वी विल सी दैट एक्सचेंज ऑफ गैस ओकर इन प्लांट थ्रू कहाँ से ऑक्सीजन और यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द स्टोमेटा. दिस is the microscopic view. Okay, this is the microscopic view of a leaves. Okay, as you are seeing, the inner portion is the pore which you are seeing, it is stomata. This is the stomata. Okay, and
यू आर सीइंग दैट इज बादाम जैसा स्ट्रक्चर दिखा, बादाम के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये वाला, उसे बोलते हैं गार्ड सेल, ओके, विच इज हेल्पिंग टू क्लोज एंड ओपन द स्टोमेटा. Clear? The green portion which you are seeing in the guard cell, that is known as a chloroplast, and chloroplast consists a chlorophyll. Clear? Now there is a lenticell, okay, there is a lenticell in stem. So this is our stem, okay, this is our stem. जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, जो स्टेम होता है, वहाँ से भी आपका गैस एक्सचेंज होता है lenticell से. Clear? Then after, from where other the gas is exchanging, so this is exchanging from the surface of our root, of the our root नहीं, ट्री के रूट में से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज होता है. ये रूट होती है ट्री की, ठीक है, वहाँ से भी गैस एक्सचेंज होता है. सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद द ग्लूकोज, okay, to create carbon dioxide, water and energy. So what is happening in the respiration? At the time of respiration the plant have the glucose, ठीक है, प्लांट के पास ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, द एनर्जी होती है प्लांट में इमीडिएटली यूज़ नहीं होती, तो स्टार्च के फॉर्म में रहती है. स्टार्च इज नथिंग बट द ग्लूकोज. अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो हियर दिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से आपको क्या मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है, जैसे कि आपने पढ़ लिया है. सो हियर what is happening, here we are getting the carbon dioxide and water in the respiration. So when the respiration occur, here the below reaction, this respiration reaction is occur in the plant at night time. Yes, respiration कब होता है, प्लांट के अंदर नाइट के टाइम में होता है. क्लियर? कहाँ पे होता है, नाइट के टाइम में. सो नाइट के टाइम पे देर इज नो सनलाइट. So if there is a sunlight, the process which occur in the plant, that is photosynthesis process. So it is the opposite of the respiration process. So as here we had understood the respiration in plant. Respiration plant में कुछ भी नहीं है. ऑक्सीजन कहाँ से एक्सचेंज, एयर का कहाँ से होता है, गैस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो मैंने बोल दिया, आई टोल्ड यू दैट स्टोमेटा, लेंटिल इन स्टीम्स एंड रूट्स इन द ट्री. Then after respiration we have to go through respiration reaction. So respiration reaction occur at the night time. At that time glucose will react, or you can say combine with the oxygen, and you will get the product, that is carbon dioxide and oxygen. That's why we are telling that at the time of the night you don't have to stay, और आपको नज़दीक नहीं जाना ट्री के. क्यों? क्योंकि एयर, carbon dioxide is releasing from the tree, and it is very harmful to us because we need oxygen for our respiration. So students, here I am stump my video, and from next video we will go through our next topic. So I am just stumping this lecture here. Bye bye.